आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स में क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट द डिफरेंस इज दैट अंटिल नाउ व्हाटएवर फंक्शंस वी डिड उसमें क्या था ना, फंक्शन डिफाइंड था कि फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, यू नो, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बीइंग 1 by 1 plus x, फाइंड व्हाटएवर, राइट? ठीक है, फिर कॉम्पोजिट फंक्शंस भी थे, एफ ऑफ एक्स इज दिस, जी ऑफ एक्स इज दिस, सो वी हैड डिफाइंड फंक्शन लाइक दिस, हमने एक्स के किसी वो बना के एक्सप्रेशन बना के डिफाइन किया था. बट नाउ द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज चेंज्ड. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डिफाइनिंग योर फंक्शन as an addition subtraction or some relation with other function values. तो ये नहीं पता कि f of x का फॉर्मूला क्या है डायरेक्टली. Is it x square plus 2, 3x cube plus 9, x square upon 1 plus x? What is it? We don't know. We just know that every x का value can be determined by adding the previous two values. अगर f of 3 है, तो 3 के लिए 2 और 1 को ऐड करो. Right? Function of 2 and function of 1 को ऐड करो. f of 4 है तो 3 और 2 को ऐड करो. जैसे प्रीवियस फंक्शंस को ऐड करके हम करंट फंक्शन वैल्यू मिलेगी. ये डिफाइन किया है, इस तरीके से डिफाइन नहीं किया है. दिस इज द क्लासिक डिफरेंस ऑफ दिस पैटर्न वाला क्वेश्चंस. इट लार्जली कम इन दिस फॉर्मेट. ठीक है, नाउ आफ्टर यू लर्न दिस, द नेक्स्ट बिट इज टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने निकालने क्या बोला है, f of 6. तो पहले हमने f3 से स्टार्ट किया, और दूसरा स्टार्टिंग की कुछ फंक्शंस की वैल्यू दे देते हैं. वो स्टार्टिंग की मतलब 1 और 2 की वैल्यू उन्होंने दे दी है, f1 f2 की. क्योंकि तुम्हें f1 f2 ही नहीं तो तुम कैसे निकालोगे फॉर्मूला थोड़ी है. f3 कैसे निकलेगा f2 और f1 से, f6 कैसे निकलेगा f4 और f5 से. तो उसकी मुझे 1 और 2 तो देना पड़ेगा. तो ऐसे वो कैसे दे दे, और प्रीवियस वैल्यू से फिर तुम्हें वैल्यूज निकालते जानी होती है, जैसे हमने प्रीवियस में f6 निकाला था होमवर्क में. डू यू अंडरस्टैंड दिस? है ना? So f4 is f3 plus f2, which was 5 plus 3 is equal to 8. Then f5 was f4 plus f3, which was 8 plus 5, that is 13, right? And then we had f6, which is f5 plus f4, which is 21. और ऐसे करके हमारा आंसर आएगा. So are we clear about this pattern of questions? Can we move next? चलो ये वाला solve करो accordingly. Solve this. कैसे करना है हमको? यहाँ पे अगेन x is defined as a subtraction of previous two values, right? तुम्हें f1 और f2 दे दिया है, तुम्हें f8 निकालना है. f8 के लिए पहले f3 निकालना होगा. f3 will be what? 3 minus 2 is 1 minus f2, right? है ना? f3 will be x की वैल्यू 3, 3 minus 2 is 1 and 3 minus 1 is 2. तो f1 minus f2 है ये. f1 minus f2 is minus 1. So f3 की वैल्यू minus 1 आ गई. Then what is f4? f4 is f2 minus f3, right? f2 is 1 minus 1, which is 2, right? Then f5 is f3 minus f4, which is again minus 1 minus 2, which is minus 3. किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे कि सॉर्टेड है, क्लियर है, आ रहा है? बताओ बताओ बताओ. अंडरस्टूड, राइट? हम वही पैटर्न ही है. इट्स अ पैटर्न रिकॉग्निशन. यू आइडेंटिफाइड द पैटर्न एंड यू आर सॉल्विंग ओवर. f6 इज गोइंग टू बी व्हाट? f4 कहाँ गया यार? हाँ, इज गोइंग टू बी f4 minus f5. What is my f4? f4 is how much? 2 minus 3, which is going to be 5 then. Say f7 is f5 minus f6, which is minus 3 minus 5, which is minus 8. Now f8 ही निकालना है बस. So f8 is going to be यहाँ से f8 is going to be f6 minus f7. What is f6? 5 plus 8 आ जाएगा 13. So 13 is your answer. You have got the numbers same, but signs are differing. Signs are differing. Why? Because you haven't done proper calculation. That is why. I'll tell you why. That is because probably you ended up doing ulta. This is important. The sequence is important. उन्होंने क्या माइनस करने बोला? उन्होंने f2 minus f1 नहीं बोला, f1 minus f2 बोला है. f3 ये f2 minus f3 बोला है. Look at the formula. यहाँ पे values insert करना बराबर है. Am I right? You've done this mistake, right? हाँ, yes. So look at the formula properly. It is just about inserting the values. यहाँ पे देखो ना, x
x minus 2, x minus 1 दिया है, उल्टा नहीं दिया है. तो f3 is not f2 minus f1, it is f1 minus f2. That is what they have defined. This is not a rule. This is not some identity. Question में जो दिया है उसके हिसाब से solve करना है. So you have to crack the pattern first, and then you can just copy paste the pattern and keep solving. So that is why this bunch of questions are named as identifying patterns. You have to identify the pattern. Let us do now. Do this one. ये previous question में ही है इसके answers. f7 plus f4. The same question it is. Same question it is. It is just asked us to find f7 plus f4. What was f7? Minus 8. What was f4? I go deva. Sorry. f7. Sorry. f7 and f4. दोनों का addition. Minus 8 plus 2 is minus 6. So your answer is minus 6. Correct? चलो. Now let us solve this one. ये हो गया, वो एक था. अभी let us do this one as well. कितने क्वेश्चन है? This is the question. Comma, this comma. It's a little different. ठीक है? चलो, let us do this together. सबने सवाल तो पढ़ लिया. If f of x is defined by all real values of x such that, उन्होंने अभी यहाँ पे definition दिया है. There is no pattern, but they have given a definition. ये उन्होंने दे दिया. Now they are telling you that f3, what are they telling you? That f3 is 18, f minus 3 is also 18, and f0 is 15. Are they telling you this? Yes? Right? f3 and f minus 3 both are 18 and f0 is 15. This is what they told you. How will you solve this? I will tell you how. यहाँ पे क्या पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है कि उन्होंने 3 वैल्यूज दे दी एंड हमें ये 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पता नहीं है, ABC. 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स बनेंगे. कैसे? Basically, in this base equation, the base equation that is given to us, we will put 3 x की जगह पे 3 डालेंगे हम. This becomes 9a plus 3b plus c. Yes or no? Yes or no? If fx is ax square plus bx plus c, so f minus this, fair. What is f minus 3? That is 9a minus 3b plus c. Yes or no? Right? Minus 3 square is 9 and then this is minus 3. And what is f0? f0 is c only was. X को c only. Yes or no? Yes. We are sure this is what it is. And in सबकी उन्होंने values भी दिए. Okay, this is 18, this is 18, and this is 15. So at least we know that my c is 15 now. Right? So if I insert it here, what I get is 9a plus 3b is equal to 3. 9a minus 3b is also equals to 3. Yes or no? Do I get this? Because c मैं subtract कर दूंगी 18 में से. c is 15. Right? Yes or no? Yes, good. So now we are going to subtract this. This becomes, and we are going to simultaneously solve. We'll add both. This becomes 18a and 3b minus 3b gets cut. So this becomes 6. So a is equal to 6 by 18. That is a is equal to 1 by 3. Yes, a की भी value आ गई अपने पास. तो इससे क्या हम b की value निकाल सकते हैं? या I will insert this in one of the equations. So I'll be like, okay, 9 by 3 plus 3b is equal to 3. So b is equal to 0. Yes or no? Yes. So that way, what do I get? I understand this. I need some space. Give me some space. A की value, B की value 0 में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है? B की value 0 है. So accordingly, what do I get to know? कि this equation at the end of it is f of x is equal to a की जगह 1 by 3 डालो, 1 by 3x square plus 0x, which is 0, plus c is 15. So this is what my f of x is. So can I find f12 now? Can I find f12? Yes or no? Yes, I can. बताओ मुझे क्या है वैल्यू? 12 का स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है. 12 into 12 by 3 plus 15. So 12 fours are 48. 48 plus 15 is 63. So what is your answer? Fair? समझ गए कैसे सॉल्व किया हमने ये टाइप का क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट करते हैं अभी. दिस इज पैटर्न वाला ही क्वेश्चन अगेन. करो ये सॉल्व करके दिखाओ मुझे. Attempt this one. fa plus b is given as fa plus fb divided by 2. They're all different type of questions जिसमें बेस पैटर्न ही recognize करना है बस. They have given
What have they given? They have given here f a plus b is equal to f a into f b by 2. कैसे करेंगे? हमें ये निकालना है. कैसे निकालेंगे बताओ? You give me the starting point. That's it. आगे का मैं सॉल्व करती हूँ. कैसे करेंगे सॉल्व? हमें पता है दो नंबर के एडिशन का जो फंक्शन है वो उनके मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2 है. सो हाउ विल वी डू इट? How will we do it? We'll be like, oh, can I write 12b as 6b, 6b, 6b plus 6b? Can I write 12b as 6b plus 6b? Yes, I can. So let me backtrack it. Let me backtrace it. I can write it as 6b plus 6b. Yep. Yep. So let me write it. Is equal to f of 6b into 6b. मतलब इसका square divided by 2. Function of 6b का square divided by 2. Yes. And then 6b को can I write 3b plus 3b? Right? F of 6b is 3b plus 3b. Yes or no? So that will be f of 3b into f of 3b. That is f of 3b square by 2. Right? If I merge both of these, it's basically becoming that my f of 12b, okay, 12b I'm writing as of 6b square divided by 2, and f6b itself is 3b का square divided by 2. तो उसका square करेंगे हम, right? 6b मैंने insert किया बस. So this becomes what? This becomes f of 3b raised to power 4, right? Divided by f3b raised to power 4 divided by 2 cube. Are we on board here? इधर तक आया है? समझा है नहीं समझा है? मुझे पता है कुछ कुछ लोगों को नहीं समझा है, इसलिए आई एम वेटिंग फॉर थम्स अप्स. हमने क्या किया? बस हमको इस तरीके से डेफिनेशन दिया गया है a प्लस बी का a इंटू बी, और मुझे ये निकालना है. मैं कैसे निकालू भाई? मुझे पास कोई वैल्यूज ही नहीं है. तो देन आई एम लाइक, ओके, लेट मी स्मार्टली स्प्लिट दिस इनटू एडिशन ऑफ टू थिंग्स. हाँ, आई कुड राइट 10 plus 2, I could write 11b plus 1b, but then I'll have to keep finding values. But if I do 6b plus 6b, then I have to just find 6b, one value. So then it will be like 6b का square, because f of 6b into f of 6b हो जाएगा 6b square. और वैसे 6b को मैं 3b plus 3b लिख सकती हूँ. तो ऐसे करके मेरा यहाँ तक आंसर आया. That so far I have my f of 12b written as f of 3b raised to power 4 ना, divided by 2 cube. इधर तक आया मेरा. But if I look at all the options, all of my options are present in b, not 3b format. तो फिर मुझे b को स्प्लिट करना पड़ेगा. b को कैसे एडिशन लिख सकती हूँ मैं 3b को? 3b can be written as f 2b plus f 1b. Sorry. 3b can be written as 2b plus 1b. Correct? Correct? Which is equal to, again, something plus something is f of this into f of, as per the definition that is given to us, divided by 2. Right? और अब ये 1 और 2 आया है, उसमें भी 2b को मैं 1b लिख सकती हूँ. तो मेरा ये f 2b is equal to f 1b plus 1b. This will be f of b into f of b, that is fb square divided by 2. Right? So I have to insert the same thing here again. What do I get? I get my f3b. Let me write it in blue or something. So I get this, my f3b is equal to f2b. f2b is itself this, fb square divided by 2 into fb by 2, which is fb cube divided by 2 square. Right? And then this 3b, f3b, I have to insert in the main equation, because at that I have to find f12b only. Right? So my f12b becomes f3b की जगह डालो ये भाई, fb cube by 2 square. All of this raised to power 4 divided by 2 cube. So this becomes fb raised to power 12, because 3 4s are 12, divided by 2 raised to 2 square raised to 4 कितना होता है? 2 raised to 8 and 2 raised to 11. This is what the answer is. This is your final answer, which is where? Option D. You get it? Yes or no? Another way to do it was also to do some pattern recognition जुगाड़ यहाँ पे. What जुगाड़ could you do?
What जुगाड़ could you do? By observing this pattern. What you could observe is, मैं नीचे लिखती हूँ, हाँ जगह नहीं है आपके पास. So मैं क्या लिखूंगी, मैं ना F2B पहले आइडेंटिफाई करूंगी. 2B क्या होगा, FB plus FB. Sorry, 2B is FB plus B. And as per the definition, that means FB into FB divided by 2. यही था ना definition. Definition तो यही था कि f of a plus b is equal to fa into fb by 2. तो ऐसे ही अगर b plus b है तो fb into fb by 2 बनेगा, राइट? तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है f of 2b is equal to fb square divided by 2 raised to 1. ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज मेरे ऑप्शंस इसी फॉर्मेट में, राइट? तो वैसे ना लेट मी फाइंड fb f4b. f4b is f2b plus 2b, right? Which is f2b square divided by 2. And f2b is this. So let me insert. This becomes fb square, ka square, matlab raised to power 4 divided by 2 cube. So now I start observing pattern. Ki bro, when it is 2b, it becomes raised to power 2 and 2 raised to power 1. When it is 4b, it is raised to power 4 and then नीचे 3. तो मतलब अगर 12b आया तो ऊपर raised to power 12 और नीचे raised to power 11 आएगा -1. ये भी मैं एक अप्रोच ले सकती हूँ सॉल्व करने के पैटर्न रिकॉग्निशन से. सो उल्टा भी तुम कर सकते हो टू बी मोर कॉन्फिडेंट, बट दैट गॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड. इफ यू गो सीधा एंड ऑब्जर्व पैटर्न, दिस आल्सो वर्क्स. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस, वेरी गुड. चलो लेट्स डू सिक्स्थ वन नाउ. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. नाउ वी आर वार्मिंग अप टू एक्चुअल कैट लेवल अगेन. ठीक है, देखो ये एक सवाल है, इसको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे. या क्या बोला है, एफ एन is defined as this. We have been doing this kind of question so far. हम कर रहे हैं ना, function defined as other function values, ये कर रहे हैं. और some value is given, ये भी हमने किया, right? f1 f2 दे दिया था, यहाँ पे f1 की वैल्यू दे दिया. अब they are asking you to find this plus so on till f1000. अब तक हम मैन्युअली वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे. 12 तक का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है ना. f8 f7 f4 f6 सब कैलकुलेट किया अभी हमने, इतने सारे जो 5 क्वेश्चंस करे, right? But to f1000, if I keep going on and pattern में ऐसे मैन्युअली करते रहूंगी तो पूरे 40 मिनट कैट का पेपर मेरा यही सॉल्व करने में जाएगा. So of course it can't be calculation like that. There has to be some pattern, there has to be some shortcut, कुछ तो होगा जुगाड़. So let us find out how to get there. तो यहाँ पे pattern recognition becomes much more important. जैसे कि यहाँ पे हमने अभी सीखा कि pattern कैसे recognize किया हमने जब यहाँ solve किया हमने कैसे pattern recognize किया. We were like okay, when it is 2, you have raised to power 2 and 2 minus 1 raised to power 1. When it is 4, it is raised to power 4 and 3. So when it is 12, it will be raised to power 12 and 11. The pattern we recognize without calculation. So similarly, we cannot manually calculate it with 1000. We will need some pattern that comes in handy for us. So how do we do that? How do we get there? Is what we will solve for. Okay. So let us be neat, clean and solve it one by one. पहले तो definition देखो. Definition is given as f of n minus 1 is equal to 1 by 2 minus fn. Let me take next page to solve it so that we have more space. So here you have f n minus 1 is equal to 1 by 2 minus fn. Now I have a problem with this definition. My problem is they have given n minus 1 in form of n. तुम जब फंक्शन लिखोगे f1 f2 f3 f4 पहले छोटे वाले जाएंगे. f1 आएगा, फिर f2 आएगा, फिर f3 आएगा, फिर f4 आएगा, है ना? तो मैं f4 को डिफाइन कर सकती हूँ f3 के फॉर्मेट में, बिकॉज मेरे पास f3 की वैल्यू आएगी. f3 को मैं डिफाइन कर सकती हूँ f2 f1 के वैल्यू में. ऐसे ही हो रहा था अभी तक. यहाँ पे उल्टा दिया. यहाँ पे उन्होंने बोला fn minus 1, पिछला वाला टर्म नेक्स्ट वाले टर्म से डिफाइन होगा, बिकॉज fn will come later. We can't do it, right? So we will have to first adjust this formula correctly. कैसे करेंगे हम करेंगे okay. This means 2 minus fn is equal to 1 by fn minus 1, right? I just cross multiplied. So this becomes my fn is equal to 2 minus 1 by fn minus 1. Fair? Fair? Now I can solve. Now my next term, that is n, is defined by n minus 1. This I can do because I get n minus 1 first. Yes or no? Do you understand why did I readjust it? Okay. Cool. Now let us start identifying patterns. हमको क्या बोला है, हमें f1 की वैल्यू दे दी है. f1 की वैल्यू दे दी है 3. We know f1 is 3. Now let us see what f2 is.
f2 will be 2 minus 1 by f1. Correct? f2 will be 2 minus 1 by f1. Amrita, Rene, are we okay here? Yes? So then this becomes 2 minus 1 by 3. Correct? 2 minus 1 by 3 is 5 by 3. Fair. Okay, now let me find f3. f3 is 2 minus 1 by f2. Is 2 minus 1 by 5 by 3, matlab 3 by 5. This is 7 by 5. Correct? Now let me do f4. f4 will be 2 minus 1 by f3. That is 2 minus 7 by 5. Sorry, 7 by 5 means 2 by 5 by 7. Which is 9 by 7. Right? And f1 will लिख लेती हूँ. Very good. You got the answer. Very good. So till here you notice a pattern. अब तूने 4 वैल्यू निकाल ली. अभी you should able to find some pattern. कि कुछ pattern है क्या इनमें? Is there some pattern that I'm able to recognize? You should be able to find some pattern here because you can't go on till f5, 6, 7, 10,000, right? So are we understanding some pattern? 3. मैंने 3 by 1 क्यों लिखा? Because subtraction थे. Right? 3 by 1, 5 by 3, 7 by 5, 9 by 7. What am I noticing? I'm noticing that any function fn is given as 2n plus 1 upon 2n minus 1. देखो odd numbers है. कैसी सीरीज आई हमारी 3 by 1, 5 by 3, ऐसी सीरीज लिख लो 9 by 7. तो इसके बाद क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर सीइंग? देखो 1, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 11 आएगा और यहाँ 9 आएगा. राइट? तो ये हमें पैटर्न दिख रहा है ना? तो इस पैटर्न को मैं समराइज कैसे करूं? तो मुझे दिख रहा है दिस इज 2 plus 1, 2 minus 1. This is 6 plus 1, 6 minus 1. Sorry, 4 plus 1, 4 minus 1. This is 6 plus 1, 6 minus 1. And what is 6? 6 is 2 times of 3. What is 4? 2 times of 2. What is 2? 2 times of 1. Right? So, at any n, it is 2n plus 1 and 2n minus 1 नीचे. When n is 4, fourth term. So 4 to the 8. It is 8 plus 1 ऊपर, 8 minus 1 नीचे. This is how we are getting. So we get some term here. है ना? हमें पता चलता है कि fn का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है. तो हमें f1000 या f1 लाख भी निकाल सकते हो. This is how pattern recognition helps you. तो अभी तुमको ये आ गया, इससे ये वाला सवाल सॉल्व करो. कि बेसिकली हमको फॉर्मूला मिल गया कि fn is equal to 2n plus 1 upon 2n minus 1. उसके हेल्प से what are they asked us to find? They have asked us to find this. This is box is greatest integer value. It is box of 1, box of 2, greatest integer value. So bhai, okay, let me write f1, f2, f3, f4, f5, so on till f1000. I have to keep adding. Or inka box I have to add. Box is what? Greatest integer function. Right? If I write them, basically this is 3, 1. It's 5 by 3. This is 7 by 5. This is 9 by 7 and so on. This will be 2001 divided by 1999. Right? 2000 minus 1. If I do this, ये तो मेरा 3 ही है. ये तो मेरा 3 है. Box of 3 is 3. This is 1 point something. Right? This is 1.66. 5 by 3 is 1.66. 1.66 the greatest integer function क्या होगा? The closest integer to it is 1. Right? This is 1.4. 7 by 5 is 1.4. तो उसका भी 1 ही होगा. ये क्या है? 9 by 7. 9 by 7 is 1.28 types हो जाएगा, which is also 1. So all of this is 1. Again, 2001 divided by 1999 is 1 point something. This is 1. The integer function end up with 1, 1, 1, 1, 1, 1 every time. So if you add 1 so many times, 1999 times you have to add 1. So this becomes 3 plus 999, which is 1. So what is your answer? तो ऐसे पैटर्न रिकॉग्निशन करना है हमको. वहां पे उन्होंने देखो हमें बॉक्स निकालने बोला, नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, चलो, वेरी गुड. सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड हियर. Same question is repeated for the above question, for the previous question. So in the previous question, they're asking us to
to find the multiplications. F1 कितना हमारा 3/1, 5/3. ऐसे आएगा, देखो कट होते जा रहा है, कट होते जा रहा है, कट होते जा रहा है, तो ऐसे ऐसे करके ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या 2001 है। तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करने से हमारा जो तुरंत सॉल्व हो जाता है. इट्स जस्ट अबाउट अस अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न फर्स्ट. कूल, आर वी कंफर्टेबल विद दीस काइंड क्वेश्चंस नाउ? 7th क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं चाहिए थी. चलो ये करो, डू दिस वन. यस, स्मार्ट, हु वाज स्मार्ट इनफ टू सॉल्व इट? कैसे करना है इसको? आया किसी को? Again, it is of the same format. The moment you see questions like this, जहाँ पे you are like, okay, the function is not defined directly, but it is defined in relation with other functions. So you know pattern recognition होगा, कुछ जुगाड़ होगा इसमें. The moment this happens, and the second thing is this, कि they give you some function value. These are the two things that classically happen, right? They give you one function as a value of other functions, and two, they give you some absolute value of some function. And then they give you such a long, this is also third nature of it. They'll give you this long something to find out, which is impractical. So then how do you find this out? You're like, okay, कुछ तो pattern होगा, कुछ तो जुगाड़ होगा, मुझे जुगाड़ ढूंढना, यही पे है, मैं ढूंढ पाऊंगी कि नहीं is my thing. यही पे है, मैं ढूंढ पाऊंगी कि नहीं is my thing. So what do you notice? You notice you are given f of x into y is f of x into f of y. ठीक है. एंड हमारे क्वेश्चंस में हमें दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन दिए हैं मल्टीपल चीजों के, है ना, दिस इंटू दिस ऐसे मल्टीप्लीकेशन दिया है. तो अभी मुझे दिस वे जाना पड़ेगा. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू थिंग्स विल गिव मी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन थिंग, एंड आई नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस. सो इफ यू नोटिस द वैल्यूज गिवन हियर, दीस आर ऑल सम पावर ऑफ 2 ब्रो. दिस इज 2 के पावर्स दिए हुए हैं. यू कैन ऑब्जर्व दैट, राइट? तो उससे अगर यू नोटिस अ बिट मोर, यू रियलाइज दैट ओके, इफ आई लुक एट द एक्सट्रीम्स, if I look at f 0.5 into f 256, this will become f of 0.5 into 256, which is f of 128. Yeah, which I know is 4. Basically, if I combine these two, it becomes f 128, which is 4. Similarly, if I combine f1 and f 128, so again 1 into 128 is 128, which is again be 4. वैसे ही 64 and 2 अगर मैं लूं, तो again same will happen. f64 into f2 is basically f of 64 into 2, which is f128 again. This is also be 4. This two also 4. This two also 4. Correct? So then I'm getting this as 4 raised to 5, which is 2 raised to 10. Fair? I just want to teach you one last thing, which is multiple definition. But multiple definition bit क्या है ना? Multiple definition is these kind of. Same thing only it is. It is that it has two definitions. So what have they given? Ki if x is non-negative, not positive, and if x is negative, this is the definition. What it means is ki if my f is 1, let's say if it is 1, which is non-negative, it is positive, right? Non-negative hai, so it will be 1 by 1 plus 1, which is 1 by 2. But if my f is minus 1, let's say, which is negative, if it is negative, then it is 1 by x. That is 1 plus x. So matlab 1 plus minus 1, which is 0. ऐसा. So there are two different definitions that exist. ठीक है? Definition से लगा और देखो, और यहाँ पे भी दिया है. यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे बोला है that when x is an odd number, definition is this. When x is an even number, it is this. ठीक है? So if I have to solve this question, how I'm going to solve? If I have to find f1, my 1 is an odd number, right? So for odd number, my definition is 3 raised to x. मतलब 3 raised to 1 is 3, right? When my f is 3 also, so it is 3 raised to 3, which is 27. When my f is 5, odd number, right? 3 raised to 5, which is whatever, right? 243, whatever, right? 243 है ना? तो ये हो गया. Versus when my f is 2, so then it is 3 raised to x plus 4. So it is 3 square plus 4. When it is 4, it is 3 raised to 4 plus 4. When it is 6, it is 3 raised to 6 plus 4. This is how the definition is defined. Fair? And now they have asked you to find कि n is 72. 72 तक लेके जाओ. तो हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है कि वहां तक होगा basically 3 raised to 1 plus 3 raised to 2 plus 3 raised to 3 plus 3 raised to 4 plus 3 raised to 5
ऐसा करते करते 3 raised to 72 तक होगा, प्लस जो जितने इवन नंबर्स है उतने टाइम 4 भी ऐड होगा, ठीक है। तो 72 में कितने बार इवन नंबर्स आ रहे हैं, 6 तक 3 इवन नंबर्स आ रहे हैं, राइट। 72 तक आधा हाफ ऑफ 72, लाइक 36 इवन नंबर्स विल बी देयर, सो दिस 4 विल बी एडेड 36 टाइम्स, है ना। तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, एंड इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। सो अभी दिस बॉर्डर लाइंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम में तुम्हें बता देती, तुम्हें समझ जाएगा क्या होता है, क्योंकि अभी तुमको पता नहीं है, राइट। बट दिस इज हाउ इट इज। सो देन इसका सम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का तुम्हें सम आता है तो ये भी आ ही जाएगा कि इट इज ए इंटू, मतलब डू यू नो व्हाट आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस वगैरह? No, na? It's okay. It's okay if you don't know. We will learn it, right? But right now, just understand it is A into R. मतलब इसका R raised to N minus 1 upon R minus 1. ये आएगा आंसर बेसिकली, प्लस 36 into 4. तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो दिस इज 3/2 into e raised to 72 minus 3/2 प्लस 36 into 4. ये आंसर है। इसके आसपास कुछ आ रहा है क्या? नहीं ना, none of these answer है फिर, because nothing is coming even close to this. है? अच्छा, 1/4 भी है, there's 1/4 also, keep that in mind. हाँ, if you divide everything by 4, so this goes, this becomes 8, this becomes 8. तो अच्छा, this is 3/8 into 3 raised to 72 minus 1 जो है हमारे पास, plus 36 of course. 3/8 36, this, so A is the answer, 1/4 भी था, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला तुमको नहीं आता तो इट इज ओके, अगेन वी विल लर्न प्रोग्रेशन सेपरेटली, उसमें मैं तुम्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला भी सिखाऊंगी। एज आई टोल्ड यू कि ज्योमेट्री इज इंटरकनेक्टेड, सॉरी अपना अलजेब्रा इज इंटरकनेक्टेड, दैट्स व्हाई देयर आर गैप्स हियर एंड देयर, बट आवर मोटिव इज टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज टॉट इन द क्लास। सो टुडे वी वर टॉट मल्टीपल डेफिनेशन, कि 2 डेफिनेशन हो गए तो कैसे सॉल्व करोगे, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी 2 डेफिनेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कैसे सॉल्व करोगे, ये ऐसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। और ऊपर से उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने और एक चीज बताई है तुमको, उन्होंने बोला है कि f रेज टू n ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब बेसिकली अगर मैं f2 लूंगी, f2x, तो दैट इज f of x कॉम्पोजिट फंक्शन। अगर मैं f3 ऑफ x लिखूंगी, दैट विल बी f of x, ऐसा। तो फिर तुम्हारा आंसर क्या आएगा, वो पूछ रहा है, उन्होंने सवाल पूछ लिया है यहाँ पे। लेट अस फाइंड आउट, नो, let us copy this question and let us find out. Let us take this as the last question of today's class. They're asking you to find f2 plus 1 2 3 4 5. अच्छा, okay. They're asking you to find this. ठीक है, तो हमको तो पता है भाई 2 तुम्हारा नॉन नेगेटिव है ना, हमको तो पता है कि 2 हमारा नॉन नेगेटिव है, तो इसका आंसर तो ये यही होगा, 1/1 plus x, which is 1/3, है ना। x अगर 2 डाला तो 1/3 आएगा, राइट। तो f2 की तो वैल्यू हमको पता है 1/3 है ना। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है f of f2। f of f2 कितना होता है, f of 1/3, और f of 1/3 क्या आएगा, 1/3 भी नॉन नेगेटिव है, राइट। 1/3 इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव, तो 1/1 plus 1/3, हाँ या ना। सो दिस बिकम्स 4, 3/4, right? So this is 3/4. This is what? This will become again f of all of this. So f of 3/4, है ना? f of 2, तो दो बार का f तो आ गया. So then this is 3/4. 3/4 is also 1/1 plus 3/4. 1/1 plus x के हिसाब से this becomes 4/7, right? Similarly, this will be 1/3, 3/4, 4/7. कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? Let us solve. Let us solve. This will become f of 4/7, which is 1/1 plus 4/7, which is how much? 7/11. And this is also again f of 7/11 then, which is 1/1 plus 7/11, which is again 11/18. है ना? और इन सबका मल्टीप्लीकेशन लेने बोला है भाई, 1/18 आंसर आ रहा है हमारा। फेयर, अंडरस्टूड? यहाँ पे आंसर इज 1/18, ऑप्शन सी। ये हमने कैसे निकाला, ये समझा ना तुमको? व्हाट डिड दिस मीन? What did this mean? I hope you understood that. अगर तुम 5 times f निकाल रहे हो, मतलब 4 times f का f निकाल रहे हो, राइट। 4 times f हमने निकाल लिया, 7/18 है, तो 5 times is f of 7/11 directly,
Fair? Understood? So this was it about today's class. Main thing that we learned were two things: shifting of graphs and pattern recognition and multiple definition. Maybe pattern recognition ही हमने सीखा. So this is it. ठीक है? I hope you had fun solving it. एक बार तुम्हें आने लगता है ना तो pattern recognition can become a lot of fun. And सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब चीजें कट होने लगती है और आंसर इतना सा होता है. ठीक है? तो वही हमें ध्यान में रखना है. And उसी को ध्यान में रखते हुए you are free to solve function questions from the study mode now. And थोड़ा थोड़ा practice करते रहो so that you don't miss out on it. So I would suggest that your arithmetic is pending. For those who ever arithmetic is pending, you should keep doing arithmetic thoda thoda, but keep in touch with algebra also.